Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Samina Khan, lecturer, Southern Business School, Institute of Southern Punjab, Multan. We are going to start our lecture of Computer Application and Business. This is week 7 and lecture number 7. आज का हमारा टॉपिक है द सिस्टम यूनिट। प्रीवियस लेक्चर में हमने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स के बारे में बात की, आज हम बात करेंगे सिस्टम यूनिट के बारे में। So the learning objectives of this lecture are introduction about the system unit, processor, memory, types of memory, expansion slots and adapter cards, ports and connectors, buses and power supply. So ये हमारे इस लेक्चर के learning objectives हैं। Starting with the system unit. The system unit is a case that contains electronic components of the computer used to process data. System units are available in a variety of shapes and sizes. The case of the system unit is made of metal or plastic and protects the internal electronic components from damage. All computers and mobile devices have a system unit. As we know, सिस्टम यूनिट में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं जो डेटा को प्रोसेस करते हैं। सिस्टम यूनिट्स डिफरेंट शेप्स और साइजेस में अवेलेबल होते हैं और तमाम कंप्यूटर्स और मोबाइल डिवाइसेस में सिस्टम यूनिट मौजूद होता है। Some of the components of system unit include the processor, memory, adapter cards, drive base, and the power supply. The motherboard, sometimes called a system board, is the main circuit board of the system unit. Many electronic components attach to the motherboard, others are built into it. अगर हम सिस्टम यूनिट के कंपोनेंट्स की बात करें तो इसमें प्रोसेसर, मेमोरी, अडेप्टर कार्ड्स, ड्राइव बेस और पावर सप्लाई आ जाते हैं। मदरबोर्ड, जिसको हम सिस्टम बोर्ड भी कहते हैं, ये मेन सर्किट बोर्ड होता है सिस्टम यूनिट का। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स अटैच होते हैं मदरबोर्ड के साथ और कुछ बिल्ट इन होते हैं। नाउ मूविंग ऑनवर्ड्स, अब हम प्रोसेसर की बात करेंगे। द प्रोसेसर, ऑल्सो कॉल्ड द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट (CPU), interprets and carries out the basic instructions that operate a computer. The processor significantly impacts overall computing power and manages most of a computer's operations. On a personal computer, all functions of the processor usually are on a single chip. Some computer and chip manufacturers use the term microprocessor to refer to a personal computer processor chip. अगर हम प्रोसेसर की बात करें तो प्रोसेसर, जिसको हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं, ये इंटरप्रेट करता है और कैरी आउट करता है बेसिक इंस्ट्रक्शंस को, वो इंस्ट्रक्शंस जो कंप्यूटर को ऑपरेट करती हैं। प्रोसेसर इम्पैक्ट करता है ओवरऑल कंप्यूटिंग पावर को और कंप्यूटर ऑपरेशंस को मैनेज करता है। पर्सनल कंप्यूटर में तमाम फंक्शंस प्रोसेसर के जो हैं वो एक सिंगल चिप पर होते हैं। कंप्यूटर और चिप मैन्युफैक्चरर्स माइक्रो प्रोसेसर की टर्म यूज करते हैं पर्सनल कंप्यूटर प्रोसेसर चिप के लिए। मोस्ट प्रोसेसर चिप मैन्युफैक्चरर्स नाउ ऑफर मल्टी-कोर प्रोसेसर्स. A processor core contains the circuitry necessary to execute instructions. The operating system views each processor core as a separate processor. A multi-core processor is a chip with two or more separate processor cores. Two common multi-core processors are dual-core and quad-core. A dual-core processor is a chip that contains two separate processor cores. Similarly, a quad-core processor is a chip with four separate processor cores. अब ऑपरेटिंग सिस्टम में हर प्रोसेसर कोर को सेपरेट प्रोसेसर कंसिडर किया जाता है और अगर हम मल्टी कोर प्रोसेसर की बात करें तो मल्टी कोर प्रोसेसर वो चिप है जिसमें दो या दो से ज्यादा सेपरेट प्रोसेसर कोर्स होते हैं। दो कॉमन मल्टी कोर प्रोसेसर्स में डुअल कोर और क्वाड कोर प्रोसेसर्स आ जाते हैं। डुअल कोर प्रोसेसर वो चिप है जिसमें दो सेपरेट प्रोसेसर कोर्स होते हैं और क्वाड कोर प्रोसेसर वो चिप जिसमें चार सेपरेट प्रोसेसर कोर्स होते हैं। Processors contain a control unit and an arithmetic logic unit. These two components work together to perform processing operations. प्रोसेसर में हमारे पास कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। ये दो कंपोनेंट्स डिफरेंट
प्रोसेसिंग ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे होते हैं। अगर हम कंट्रोल यूनिट की बात करें तो द कंट्रोल यूनिट इज द कंपोनेंट ऑफ द प्रोसेसर दैट डायरेक्ट्स एंड कोऑर्डिनेट्स मोस्ट ऑफ द ऑपरेशंस इन अ कंप्यूटर। द कंट्रोल यूनिट हैज अ रोल मच लाइक अ ट्रैफिक कॉप. It interprets each instruction issued by a program and then initiates the appropriate action to carry out the instruction. कंट्रोल यूनिट वो कंपोनेंट होता है प्रोसेसर का जो डायरेक्ट करता है और कोऑर्डिनेट करता है ऑपरेशंस को। कंट्रोल यूनिट इंटरप्रेट करता है हर इंस्ट्रक्शन को, वो इंस्ट्रक्शन जो प्रोग्राम इशू करता है ये उसको इंटरप्रेट करता है और फिर इनिशिएट करता है एप्रोप्रिएट एक्शंस को इन इंस्ट्रक्शंस को कैरी आउट करने के लिए। Now the arithmetic logic unit. The arithmetic logic unit, another component of the processor, performs arithmetic, comparison and other operations. Arithmetic operations include basic calculations such as addition, subtraction, multiplication and division. Comparison operations involve comparing one data item with another to determine whether the first item is greater than, equal to or less than the other item. Depending on the result of the comparison, different actions may occur. अब अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो प्रोसेसर का कंपोनेंट है ये अरिथमेटिक, कंपैरिजन और दूसरे ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा होता है। अरिथमेटिक ऑपरेशंस में हमारे पास बेसिक कैलकुलेशंस जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आ जाते हैं, ये शामिल होते हैं। और कंपैरिजन ऑपरेशंस में हम कंपेयर करते हैं एक डेटा आइटम को दूसरे डेटा आइटम के साथ, ये देखने के लिए कि फर्स्ट आइटम जो है वो ग्रेटर है, इक्वल है या लेस है दूसरे आइटम से। और इनके रिजल्ट्स पे डिपेंड करता है, इन कंपैरिजन के रिजल्ट्स पे डिपेंड करता है कि हमने कौन से डिफरेंट एक्शंस लेने हैं। सो दिस इज अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। नाउ मूविंग ऑनवर्ड्स, अब हम बात करेंगे मशीन साइकिल की। फॉर एवरी इंस्ट्रक्शन अ प्रोसेसर रिपीट्स अ सेट ऑफ 4 बेसिक ऑपरेशंस व्हिच कंप्राइज अ मशीन साइकिल। हर इंस्ट्रक्शन के लिए प्रोसेसर रिपीट करता है 4 बेसिक ऑपरेशंस को जो मशीन साइकिल बनाते हैं। इनमें फेचिंग, डिकोडिंग, एग्जीक्यूटिंग और स्टोरिंग शामिल है। अब अगर हम फेचिंग की बात करें तो फेचिंग इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग अ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन और डेटा आइटम फ्रॉम मेमोरी। सो फेचिंग में हम प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन या डेटा आइटम को मेमोरी से ऑब्टेन कर रहे होते हैं, मेमोरी से हम उसको ले रहे होते हैं। Decoding में this is the process of translating the instructions into signals the computer can execute. So decoding में हम translate करते हैं instructions को signals में जो computer execute कर सकता है। Executing is the process of carrying out the commands, and then storing in this context means writing the result to memory, not to a storage medium. So these 4 basic operations, fetching, decoding, executing and storing, these are being repeated by the processor for every instruction, and this comprises a machine cycle. Now the system clock. The processor relies on a small quartz crystal circuit called the system clock to control the timing of all computer operations. Just as your heart beats at a regular rate to keep your body functioning, the system clock generates regular electronic pulses or ticks that set the operating pace of components of the system unit. So we can say कि processor ने जब टाइमिंग को कंट्रोल करना होता है तमाम कंप्यूटर ऑपरेशंस की तो वो रिलाई करता है सिस्टम क्लॉक पर। अब इसके एग्जाम्पल हार्ट बीट की तरह है। जस्ट एज योर हार्ट बीट्स एट अ रेगुलर रेट टू कीप योर बॉडी फंक्शनिंग, सिस्टम क्लॉक भी इसी तरह से काम करती है कि ये जनरेट करती है रेगुलर इलेक्ट्रॉनिक पल्सेस जो सेट करते हैं ऑपरेटिंग पेस को, सिस्टम यूनिट के कंपोनेंट्स की ऑपरेटिंग पेस को सेट करते हैं। सो दिस इज सिस्टम क्लॉक। नाउ मूविंग ऑनवर्ड्स, अब हम बात करेंगे मेमोरी की। मेमोरी कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स दैट स्टोर इंस्ट्रक्शंस वेटिंग टू बी एग्जीक्यूटेड बाय द प्रोसेसर, data needed by those instructions and the results of processing the data information. Memory usually consists of one or more chips on the motherboard or some other circuit board in the computer. अब मेमोरी में वो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स आ जाते हैं जो इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करते हैं, वो इंस्ट्रक्शन जो प्रोसेसर ने एग्जीक्यूट करनी होती हैं। इन इंस्ट्रक्शंस के लिए जो डेटा रिक्वायर्ड होता है उनको स्टोर करते हैं और
जो रिजल्ट्स होते हैं डाटा को प्रोसेस करने के बाद हमारे पास जो इंफॉर्मेशन आती है उसको भी स्टोर किया जाता है। अब मेमोरी में हमारे पास एक या एक से ज्यादा चिप्स होती हैं मदरबोर्ड पर या दूसरे सर्किट बोर्ड पर कंप्यूटर में। सो इट यूजुअली कंसिस्ट ऑफ वन और मोर चिप्स ऑन द मदरबोर्ड और सम अदर सर्किट बोर्ड इन द कंप्यूटर। Memory stores three basic categories of items: the operating system and other system software that control or maintain the computer and its devices, application programs that carry out a specific tasks such as word processing, and the data being processed by the application programs and resulting information. अब memory तीन basic categories of items को store करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम की हम बात करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरे सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कंट्रोल करते हैं या मेंटेन करते हैं कंप्यूटर को और इसके डिवाइसेस को। सेकेंडली एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को जो कैरी आउट करते हैं स्पेसिफिक टास्क जैसे कि वर्ड प्रोसेसिंग। एंड थर्ड जो डेटा प्रोसेस हो रहा होता है इन एप्लीकेशन प्रोग्राम से और जो रिजल्टिंग इंफॉर्मेशन होती है। सो ये जो रोल है मेमोरी का डेटा और प्रोग्राम्स को स्टोर करने का, इसको हम स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट कहते हैं। अ बाइट कैरेक्टर इज द बेसिक स्टोरेज यूनिट इन मेमोरी। When application program instructions and data are transferred to memory from storage devices, the instructions and data exist as bytes. Byte basic storage unit होता है मेमोरी में। जब एप्लीकेशन प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस और डेटा ट्रांसफर होते हैं स्टोरेज डिवाइसेस से मेमोरी में तो इंस्ट्रक्शंस और डेटा एग्जिस्ट करते हैं बाइट्स की फॉर्म में। सो बाइट बेसिक स्टोरेज यूनिट है मेमोरी में। नाउ टाइप्स ऑफ मेमोरी। द सिस्टम यूनिट contains two types of memory, volatile and non-volatile. When the computer's power is turned off, volatile memory loses its contents. Non-volatile memory, by contrast, does not lose its contents when power is removed from the computer. Thus, volatile memory is temporary and non-volatile memory is permanent. RAM is the most common type of volatile memory. Examples of non-volatile memory include ROM and flash memory. अब सिस्टम यूनिट में हमारे पास दो तरह की मेमोरी होती है, वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। वॉलेटाइल मेमोरी टेम्परेरी होती है जबकि नॉन वॉलेटाइल मेमोरी परमानेंट होती है। रैम की अगर हम बात करें तो ये कॉमन टाइप है वॉलेटाइल मेमोरी की और नॉन वॉलेटाइल मेमोरी में हमारे पास रोम और फ्लैश मेमोरी आ जाती है। सो हम डिस्कस करेंगे अब रैम को, रोम को और फ्लैश मेमोरी को। रैम, users typically are referring to RAM when discussing computer memory. RAM, random access memory, also called main memory, consists of memory chips that can be read from and written to by the processor and other devices. When you turn on power to a computer, certain operating system files, such as the files that determine how the desktop appears, load into RAM from a storage device such as a hard disk. These files remain in RAM as long as the computer has continuous power. As additional programs and data are requested, they also load into RAM from storage. Users typically refer कर रहे होते हैं RAM को जब कंप्यूटर की मेमोरी को डिस्कस कर रहे होते हैं। RAM, रैंडम एक्सेस मेमोरी को हम मेन मेमोरी भी कहते हैं। इसमें वो मेमोरी चिप्स आ जाती हैं जिनको प्रोसेसर और दूसरे डिवाइसेस रीड और राइट कर सकते हैं। जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल्स जैसा कि वो फाइल्स जो डिटरमिन करती हैं कि आपकी डेस्कटॉप की अपीयरेंस कैसी होगी वो लोड हो जाती हैं रैम में स्टोरेज डिवाइस से। ये फाइल्स जब तक आपका कंप्यूटर ऑन रहता है, आप कंप्यूटर पे काम कर रहे होते हैं तो ये फाइल्स रैम में ही रहती हैं। The processor interprets and executes a program's instructions while the program is in RAM. During this time, the contents of RAM may change. RAM can hold multiple programs simultaneously provided the computer has enough RAM to accommodate all the programs. Most RAM is volatile, which means it loses its contents when the power is removed from the computer. For this reason, you must save any items you may need in the future. Saving is the process of copying items from RAM to a storage device such as a hard disk.
अब प्रोसेसर इंटरप्रेट करता है और एग्जीक्यूट करता है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस को जब प्रोग्राम रैम में होता है। अब इस वक्त कंटेंट्स ऑफ रैम चेंज हो सकते हैं। रैम होल्ड कर सकता है मल्टीपल प्रोग्राम्स को साइमल्टेनियसली, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि कंप्यूटर में इनफ रैम हो इन तमाम प्रोग्राम्स को अकोमोडेट करने के लिए। मोस्टली रैम इज वॉलेटाइल मेमोरी, इसलिए आपको सेव करना पड़ते हैं वो आइटम्स जो आपको फ्यूचर में रिक्वायर्ड हो सकते हैं। सो सेविंग हमारे पास वो प्रोसेस है जिससे आप कॉपी करते हैं आइटम्स को रैम से स्टोरेज डिवाइस पर। सो सेविंग इज important because RAM is volatile memory. Now ROM, read-only memory, refers to memory chips storing permanent data and instructions. The data on most ROM chips cannot be modified, hence the name read-only. ROM is non-volatile, which means its contents are not lost when the power is removed from the computer. Manufacturers of ROM chips often record data, instructions, or information on the chips when they manufacture the chips. These ROM chips, called firmware, contain permanently written data, instructions, or information. So ROM is non-volatile. जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं ROM चिप्स के, वो रिकॉर्ड करते हैं डाटा, इंस्ट्रक्शंस और इंफॉर्मेशन को चिप्स पर जब वो चिप्स को मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं। ये ROM चिप्स जिनको फर्मवेयर कहा जाता है, इन पर परमानेंटली रिटन डाटा, इंस्ट्रक्शंस और इंफॉर्मेशन होती है। नाउ फ्लैश मेमोरी। Flash memory is a type of non-volatile memory that can be erased electronically and rewritten. Most computers use flash memory to hold their startup instructions because it allows the computer easily to update its contents. Flash memory non-volatile memory की एक टाइप है जिसको आप इलेक्ट्रॉनिकली इरेज कर सकते हैं और रीड राइट कर सकते हैं। Now expansion slots and adapter cards. An expansion slot is a socket on the motherboard that can hold an adapter card. An adapter card, sometimes called an expansion card, is a circuit board that enhances functions of a component of the system unit and provides connections to peripherals. A peripheral is a device that connects to the system unit and is controlled by the processor in the computer. Examples of peripherals are modems, disk drives, printers, scanners and keyboards. Expansion slot socket होती है motherboard पर जो होल्ड कर सकती है adapter cards. Adapter card जिसको हम expansion card भी कहते हैं, this is the circuit board जो enhance करता है functions को, system unit के component के functions को enhance करता है या फिर peripherals को connections provide करता है। पैराफेरल वो डिवाइस होती है जो कनेक्ट करती है सिस्टम यूनिट के साथ और प्रोसेसर इसको कंट्रोल करता है। अगर हम पैराफेरल्स की एग्जांपल्स की बात करें तो इसमें मोडेम्स, डिस्क ड्राइव्स, प्रिंटर्स, स्कैनर्स और कीबोर्ड्स आ जाते हैं। Some motherboards include all necessary capabilities and do not require adapter cards. Other motherboards may require adapter cards to provide capabilities such as sound and video. A sound card enhances the sound generating capabilities of a personal computer by allowing sound to be input through a microphone and output through external speakers or headphones. A video card, also called a graphic card, converts computer output into a video signal that travels through a cable to the monitor which displays an image on the screen. अब कुछ मदरबोर्ड्स में तमाम नेसेसरी कैपेबिलिटीज होती हैं और वहां पर हमें अडेप्टर कार्ड की जरूरत नहीं होती, लेकिन कुछ मदरबोर्ड्स में हमें अडेप्टर कार्ड्स की जरूरत होती है अगर हमें साउंड और वीडियो की कैपेबिलिटीज प्रोवाइड करनी हो तो। साउंड कार्ड साउंड जनरेटिंग कैपेबिलिटीज को एनहांस करता है। इसी तरह से हमारे पास वीडियो कार्ड्स भी होते हैं जिनको हम ग्राफिक कार्ड्स भी कहते हैं। ये कन्वर्ट करते हैं कंप्यूटर आउटपुट को वीडियो सिग्नल्स में जो केबल के थ्रू ट्रेवल करते हैं मॉनिटर तक और डिस्प्ले होते हैं इन द फॉर्म ऑफ इमेज ऑन द स्क्रीन। Now ports and connectors. A port is the point at which a peripheral attaches to or communicate with a system unit so that the peripheral can send data to or receive information from the computer. An external device such as a keyboard, monitor, printer, mouse and microphone often attaches by a cable to a port on the system unit.
Instead of port, the term jack sometimes is used to identify audio and video ports. A connector joins a cable to a port. A connector at one end of a cable attaches to a port on the system unit, and a connector at the other end of the cable attaches to a port on the peripheral. So port वो point होता है जहां पर peripheral attach होता है system unit के साथ और communicate करता है, data को send और receive किया जाता है कंप्यूटर से. So external devices जैसा कि कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर, माउस और माइक्रोफोन वगैरह को हम अटैच करते हैं सिस्टम यूनिट के साथ. पोर्ट की बजाय जैक टर्म समटाइम हम यूज करते हैं ऑडियो और वीडियो पोर्ट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए. इसी तरह से कनेक्टर ज्वाइन करता है केबल को टू अ पोर्ट. नाउ बसेस. A computer processes and stores data as a series of electronic bits. These bits transfer internally within the circuitry of the computer along electrical channels. Each channel, called a bus, allows the various devices both inside and attached to the system unit to communicate with each other. Just as vehicles travel on a highway to move from one destination to another, bits travel on a bus. Buses are used to transfer bits from input devices to memory, from memory to the processor, from the processor to memory, and from memory to output or storage devices. कंप्यूटर प्रोसेस करता है और स्टोर करता है डेटा को सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बिट्स की फॉर्म में. ये बिट्स ट्रांसफर होती हैं इंटरनली अलोंग इलेक्ट्रिकल चैनल्स. अब हर चैनल जिसको हम बस कहते हैं ये अलाउ करता है वेरियस डिवाइसेस को इनसाइड एंड अटैच टू द सिस्टम यूनिट कि वो कम्युनिकेट कर सकें एक दूसरे के साथ. जिस तरह से व्हीकल्स ट्रैवल करते हैं हाईवे पर, इसी तरह से आपके जो बिट्स हैं वो ट्रैवल करते हैं ऑन अ बस. सो वी कैन से क्योंकि कंप्यूटर प्रोसेस करता है और स्टोर करता है डेटा को सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बिट्स की फॉर्म में, और बसेस यूज होती हैं बिट्स को ट्रांसफर करने के लिए. Buses consist of two parts, a data bus and an address bus. The data bus is used to transfer actual data and the address bus is used to transfer information about where the data should reside in memory. The size of a bus, called the bus width, determines the number of bits the computer can transmit at one time. For example, a 32-bit bus can transmit 32 bits, 4 bytes at a time. On a 64-bit bus, bit transmit from one location to another 64 bits, 8 bytes at a time. The larger the number of bits handled by a bus, the faster the computer transfers data. Most personal computers today use a 64-bit bus. अब बसेस में हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं, एक डेटा बस और दूसरी एड्रेस बस. डेटा बस को हम यूज करते हैं एक्चुअल डेटा को ट्रांसफर करने के लिए, जबकि एड्रेस बस यूज होती है इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने के लिए कि डेटा कहां पर रिजाइड होगा, मेमोरी में कहां पर होगा. नाउ द साइज ऑफ द बस, जिसको हम बस विड्थ कहते हैं, ये डिटरमिन करती है नंबर ऑफ बिट्स जो कंप्यूटर ट्रांसमिट कर सकता है एट वन टाइम. नाउ पावर सप्लाई. Many personal computers plug in standard wall outlet which supply an alternating current of 115 to 120 volts. This type of power is unsuitable for use with a computer which requires a direct current DC ranging from 5 to more than 15 volts. The power supply is the component of the system unit that converts the wall outlet AC power into DC power. Built into the power supply is a fan that keeps the power supply cool. Some have variable speed fans that change speed or stop running depending on the temperature in the system unit. अब पावर सप्लाई वो कंपोनेंट है सिस्टम यूनिट का जो कन्वर्ट करता है वॉल आउटलेट एसी पावर को डीसी पावर में. पावर सप्लाई में हमारे पास फैन भी होता है जो पावर सप्लाई को कूल रखता है. अब यहाँ पर वेरिएबल स्पीड फैंस हो सकते हैं जो स्पीड चेंज करते हैं और द स्टॉप रनिंग ये डिपेंड करता है कि सिस्टम यूनिट में टेम्परेचर क्या है. सो पावर सप्लाई सिस्टम यूनिट का वो कंपोनेंट जो एसी पावर को डीसी पावर में कन्वर्ट करता है. सो हमने सिस्टम यूनिट की बात की और डिफरेंट कंपोनेंट्स की बात की, सिस्टम यूनिट के कंपोनेंट्स की बात की. यहाँ पर हम अपने इस लेक्चर को एंड करते हैं. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे. Thank you and Allah Hafiz.